Friends, this is Bhavdeep Panda. Welcome to Master English. Pile VST 1 आम आलोचना करते दुईटा सिलेक्शन पैसेज आज आम VST 2 रे से पाखापाखि दुईटा सिलेक्शन पैसेज आलोचना करवा जदि हम टाइम जदि परमिट करे निश्चित भाव आम गोटे स्टोरी रो आ गोटे पैसेज भी आज आलोचना करवा किसी पिलांकर करथिला सर एसे राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग या ऊपर ये करंतु ता ऊपर बहुत सारा वीडियो अछि पिले ऑलरेडी फिर भी तमे जदि कहूच निश्चित भाव में स्टार्ट करवा सो आज पाखापाखि मोर सबू काम सरीगला गोटे प्रकार कहले चलो नेक्स्ट मोर आबसेंट हबार ना सो दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट रिलैक्स नाउ नेक्स्ट 2 months इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू ओनली तो प्रथम पैसेज मुझे माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जो चैप्टर अच्छी तार दैट नाइट आई वॉक्ड ओवर टू लॉन्ग रूम in the Olympic village to thank him. I knew that if it had not been for him, I probably would not be jumping in the finals the following day. ये होची तोर माने तमरो पैसेज बेले आ क्वेश्चन जो अछि सेही क्वेश्चन गुडी का रहला प्रथम प्रश्न होची why did Jesse Owens wish to thank Lord Long कोन क्वेश्चन होची why did Jesse Owens wish to thank Lord Long से काहे की धन्यवाद दवा पई चाहतले बेले तो एठी मु ए जिंसटा को गोटे क्वेश्चन टा को लेखि गिरी तो मन को देखेबी प्रश्नटा थिला why did Jesse Owens want to thank Lord Long this is the question काहे की से याकू धन्यवाद दवा पई चाहतले what is the reason तो एठी पिले गोटे जिंस देखिबा एठी होची क्वेश्चन होची डिड माने पास्ट टेंस रे होची बहुत पिला आंसर लिखला बेले एई जगह रे भूल करचंदी मु जो एग्जाम सब करैथिले आ काली हमरो एई वीक रे मु एग्जाम करै परनी एई वीक रे एग्जाम गोटे एग्जाम हेची आ गोटे एग्जाम काली हबो so why did Jesse Owens want to thank एठी होची वर्ब कोठा बेले want है तो याकू हमें लिखिबा केमती Jesse Owens wanted बुझेला एठी बहुत पिला लिखि जो एठी जे तू वांट अछि Jesse Owens want to thank Lord Long एमती कर देले एई जगह रे ही इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द टेंस so we are to follow the tense whatever tense is there in the question we are to follow the tense while writing answer उत्तर लिखला बेले बुझेला so Jesse Owens wants wanted to thank Lord Long because he would have failed in the trial without the help of Lord Long कहीं से नहले ट्रायल रे फेल हो जाइथांते फेल हेई थांते जदि से हेल्प न कर थांते सेठी पई से तांगु माने थैंक करिवा पई जाउतले थैंक करिवा पई चाहुतले ये थला प्रथम प्रश्न काहे कि हमें मु केमति लिखिबा से जिंसटा कहि दवा पई चाहुतले नंबर 2 what did they discuss पहिले कौन अच्छी what did they discuss keywords केमते रिसर्च कराले देखो what did they discuss कौन सब से माने डिस्कस कले एठी पिले कीवर्ड कौन कौन अछि मु कहि दोछि कीवर्ड कौन कौन तापर तमे लिखिबो प्रथम कथा होछि कौन पिले ट्रैक एंड फील्ड याको गेम एंड स्पोर्ट्स लिखि परिबो तम भाषा रे जदि लिखुछ सेमति लिखले भी हो ट्रैक एंड फील्ड देन वर्ल्ड सिचुएशन अबाउट देयर सेल्फ्स माने देयर सेल्फ्स एंड डजन ऑफ अदर ये होची दीज आर द कीवर्ड्स हमें जदि एतिकी लिखिबा ट्रैक एंड फील्ड दे डिस्कस छाड़ो ट्रैक एंड फील्ड वर्ल्ड सिचुएशन अबाउट देयर सेल्फ्स and dozen of other things एतिकी जदि हमें लिखिबा विल गेट 2 marks हमें लिखिबा मार्क पाइबा
So yaku likhiba, they discuss several things. They discuss several things like track and field, world situation, and about their self. तो एतिके आमे लिखिले 2 मार्क पाइबा जदि खाली कीवर्ड गुडी लिखिबा 1 मार्क मिलिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, व्हाट वाज ओलंपिक रिकॉर्ड सेट बाय जेसी ओवेन्स इन लॉन्ग जंप? व्हाट वाज ओलंपिक रिकॉर्ड सेट बाय जेसी ओवेन्स इन लॉन्ग जंप? तो यार होची 26.5 1/4. एटा होची दिस द रेकॉर्ड. एटा होची कीवर्ड. दिस द कीवर्ड. ए कीवर्ड अराउंड रे जदि हम आंसर लिखुचे 2 मार्क पाइबा हम. So the record, the Olympic record set by Jesse Owens in long jump was 26.51 1/4 inch. That's all. That's all. 2 marks you'll get. Question number 4. What are the greatest Olympic prize for Jesse Owens? His gold medal in the long jump or his friendship with long jump? Answer is already there. It is simple. That according to Jesse Owens, the greatest Olympic medal in 1936 for him was the friendship with Lodrong. So the friendship with Lodrong is your answer. 4 number question number 4 अछि. What are the ideal of periodic quotation about sports and games? Sports and games विषय periodic quotation view कौन थिला? एटी प्रश्न आसला periodic quotation किए? Periodic quotation was the founder of modern Olympic games. से थिले modern आधुनिक Olympic games रो जनक बोली तांको आजे. He was the founder, प्रतिष्ठाता. So से कौन कहिथिले फिर दुईटा जिंस कहिथिले in games and sports especially winning is not important but taking part is important. नहीं, winning is not important but taking part is important. ଆଉ से वाला लाइफ पई कोन कहिथिले? लाइफ पई कहिथिले conquering is not important but to fight well is important. दुईटा जिंस कहिथिले. So एठी कोन हमर प्रश्न डिमांड अछि, what are the ideal of periodic quotation about sports and games? According to periodic quotation in sports and games, winning is not important. The important thing is taking part. Winning is not important but the important thing is taking part. That's all. एतिकी लिखिले हमें 2 मार्क पाई जीवा. एतिकी लिखे. मोर 97 थिला +2 रे इंग्लिश रे. I have scored 97 in the year 96. 96 रे मु 97 पाइतले इंग्लिश रे. हला 10th रे मोर 99 थिला इंग्लिश रे. बट मु मैथमेटिक्स रे +2 रे सॉरी 10th रे मैथमेटिक्स रे फेल होबार संभावना थिला. मैथमेटिक्स रे मु पाइतली टोटल 45. हमर सही समय रे 22.5 थिला. सो परवर्ती ये थी देखिबा पिले. परवर्ती कोन? The most important thing we have learned so far as children are concerned is never late. ये जो टेलीविजन रो गोटे पैसेज आसेला. टेलीविजन रो पैसेज रो क्वेश्चन कोन अछि? क्वेश्चन अछि, which important thing had the poet learned about children? एक क्वेश्चन नंबर 1. 2 होची, what is the poet's advice to the parents regarding television? नंबर 2. नंबर 3 अछि, how do children spend their time with the television? केमिति स्पेंड करमते? नंबर 3 रहिला, what does the poet say about children's behavior while watching television? एवं क्वेश्चन नंबर 5 होची, why do the parents allow their children to watch television? ये होची 5टा क्वेश्चन पिले. आउ एई 5टा क्वेश्चन रो उत्तर आमुको लिखिबार अछि. बुझी होची? सो कोन हबो प्रथम प्रश्न रो उत्तर पिले? सो प्रथम प्रश्न कोन थिला? प्रथम प्रश्न थिला, which important thing had the poet learned about children? Which important thing had the poet learned about children? This is the question. So the important thing the poet learned about children is that parents and guardians should be serious to ban TV. They, parents mustn't allow their children to watch TV. This is the important thing that the poet have learned. That student mustn't be allowed to watch TV.
क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 रे कोन अछि बेले 2 टा होछि let me look at the question number 2 hela say what is the poet's advice to the parents regarding television. The poet advises the parents not to install the television at home, not to install घर को आनिबा पे मना करा जे तमे बिल्कुल इंस्टॉल की करो ना घर को आनिबो काहे की माने मुळु माइले जीवसरी जो कथा अछि not to install the television at their home. Question number 3 कौन how do children spend their times with the television. They loll and laugh and sleep and launch about ये जो question अच्छी ये जो sentence starts से पहले तो कौन अच्छी question how do children spend their time with television. They loll and slough and launch about until their eyes pop out. So children normally feels lazy while they watch television. They sit ideally in a particular place. Their limbs get weaker by this. Lots of things we can write, but I don't want to write all those things here because this is not long question at all. This is short question. You have to write the answer in one or two question, single question answer rather. So the answer should be how do children spend their time with television. Thus children spend their spend all their time in watching television, sitting lazily. Question number 4. What does the poet say about children's behavior while watching television? While watching television. टेलीविजन देखिला बेले सेमानकर बिहेवियर किभली थाए बोलिकरी कवि कहिसंते बिले. So while watching television, children quietly stare at the attractive program of the TV. They, concentrate, totally concentrate to watch TV, and until they are hypnotized by all those ghastly junk, जो पर्यंत से खराब जिनस सब देखि देखि ताको माने मस्तिष्क बसीभूत न हबो से पर्यंत से माने देखन until they are hypnotized by that program, that's real program. Till that time they watch television. Last question टा होछि बिले last question कोन last question होछि जे why do the parents allow their children to watch television. काहे की पिला मन को अलाउ करंती टीवी देखिबा पे एटा होछि परवर्ती प्रश्न. Children allow parents allow their children to watch television because it helps them to do their house chores. It helps them to do their household work. Due to television, children sit silently. They don't kick, don't punch, then they don't become violent, etc etc. That's why they can do without any disturbance their work. That's why all the maximum parents allow the children to watch television. नहीं तो ये थिला पिले तमरो दुईटा पैसेज थिला आ गोटे पैसेज अछि कोन डॉक्टर सुआर रो पैसेज अछि जेमती फर्स्ट यूनिट रो क्वेश्चन सेडा होछि क्वेश्चन होछि व्हाई डिड नॉट द पेशेंट विजिट डॉक्टर रमन बिफोर देयर फिजिकल कंडीशन वर्सन. एटा हम जानिथिबा द रीजन वाज वेरी क्लियर. Patient did not visit Dr. Raman until their condition get worsened because of his visiting fees, which was 25 rupees, and it was a high amount at the time that all the patients were not able to pay that. This is the first reason. And second reason was that they think that it was very ominous in that particular person's company because he was a man of wrath. He would he will not at all show any mercy to the patient. He will tell the truth. Means his decision is ultimate. Whatever he will tell, that is final. That's why they are afraid to visit Dr. Raman. Second answer, what is your estimate of Dr. Raman as described in the passage? Dr. Raman का विषय रे तमे कोन भाबुछो according to the passage देखिला परे तुम कोन भाबुछो? What do you think? Dr. Raman को बळिया डॉक्टर तले. So Dr. Raman, if I'll write this answer, then I must write that Dr. Raman was a man of truth. He was a very good doctor and he was a man of truth.
He just believe in treatment. He just believe in science. He did not believe at all in merciful words. According to him, agreeable words didn't save human lives. That's why there is no use of agreeable words for a doctor. And but whenever he sees any chances inside a patient, he just jumped into the arena and what worked until he wrested the prize from the CMSN. And from these sentences, the author has represented a clear sketch character of Dr. Raman that he was a good doctor. तो ये थिला हमरो जो पैसेज रो माने स्टोरी रो दुईटा प्रश्न पांच मार्किया प्रश्न ए दुईटा को ए पांच मार्किया प्रश्न को पहिले हमें कम से कम पांचटा धाड़ी रे लिखिबा आउ जो 2 मार्किया प्रश्न अछि ताको हमें गोटे धाड़ी रे भी उत्तर लिखिले हेई जीवो तापरे एठी अछि आउ कोन पहिले एठी गोटे थिला तमरो रिपोर्ट राइटिंग गोटे थिला रिपोर्ट राइटिंग ता कोन से रिपोर्ट राइटिंग ऊपर आज मु आलोचना करिबी नाही find read the passage below, answer the question. This is error correction. Then comes the table below shows maximum and minimum temperature of different places. Temperature of different places. So यहाँ ऊपर जो दी कहाँ को दरकार होची, I'll provide that PDF. Thank you. आज ही ये थी कि काली के बाद पर दिन आउ गुटे VST हमें VST आलोचना करिबा इंग्लिश रा लाइव सेशन रे VST गुडा को एति पे नोची कारण तुम मान को बुझीबा पई इजी हबो याकु मु माने फोटो उठे की पीडीएफ वर्जन रे भी करि दे पारंती जोटा सहज होबो टीचर मान को कारण आंसर देखि की पढिबा समस्त को पई आंसर देखि की पढिबा समस्त को पई सहज कारण आजकल समस्त इंग्लिश पढाइलेनी पिले आजकल इंग्लिश टीचर निर्दिष्ट नाम समस्त इंग्लिश कारण प्रोबेबल सु उतारी की पढाइबाटा बहुत सहज नहीं है सो आज पिले नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा सी दिया स्टेशन मास्टर।